Today's topic, today is very interesting. You can say web application will have a different kinds of attack on web applications. Okay, and we'll see very different things like what is dictionary transversal attack, what is Google docking, and how you can see IP loggers. And there is one more interesting thing which I'll told to you all in the last, how you can increase Instagram followers. Okay, and there is SQL injection and how you can access what is dark web and how you can access that dark web. Okay, we'll have a conversation on that, and what are the attack vectors are available out there, and what is actually web application security concern. Okay, so today's topic much interesting sounds. Okay, so we'll go further with the very simple Google docking. So anyone has used yet Google docking? What is Google docking? How and how we perform Google docking or Google hacking? So there is Google. So why we use Google? हम लोग Google क्यों सर्च करते हैं या फिर क्यों यूज करते हैं? Can anyone tell me? Anyone? Why we use Google? To search anything. Exactly, to search anything or to gather information about any particular thing. Okay, if you want to search particular college into your area, you will just Google it. Okay, or if you want to search different kinds of websites of government website or any other website, you will just search on Google. Or if you're using web applications like Facebook, Instagram, and Flipkart, Amazon, these are the web applications which you are using into your web browsers, okay, of Google. So basically, we use Google to gather much information which we needed. And there is many advanced tips and tricks which you can follow to gather information very efficiently or very easy manner. Okay, you will not have to have that headache of gathering information with the help of Google. Okay, you have to just use that Google docking and you will have that information which you need eventually right now in within 2 and 3 seconds only. Okay, first of all, there is everything on the Google. Are you agree? Everything which we want or we want to know about anything, everything is on Google. Okay, and it depends whether we are accessing that kind of information or not. It's totally depend the keywords which you are putting on that Google search bar. It totally depends on that, because according to the keyword only we are getting informations. Okay, and if you are putting any different kinds of information, you will get different kinds of information like see, tea shop. If I will put tea shop, so I'll get this kind of information. And if I will put tea shop morning, I will get different kind of information. So just putting keywords, you will come to know what kind of information you are getting over there. Okay. So we'll use Google to find the information which we are needed. Okay. So we'll go through the what is Google docking. And this is PDF. How can I be? Okay, see, what is Google docking?
Google docking is also called as Google hacking. It doesn't mean you are hacking Google website and Google company at all. Okay, Google is so big company. Okay, it's not easy to hack Google. Okay, until and unless there is any kind of misconfiguration. Okay, so there is just a technique that we are using to into Google search engine to gather information which we are needed in efficient manner. Okay, तो हम लोग क्या क्या देखेंगे? How many people have heard of Google Docking before this meetup? Okay, so I think anyone have heard till yet? किसी ने Google Docking पहले सुना है, ट्राई किया है या फिर anything? No? Okay, so using public sources openly and without resorting to illegal means, it is possible to gather at least 80% of all the information required about the enemy. If you have any enemy and if you want to gather information about your enemy, so you can gather all the information regarding that person or that particular company with the help of Google. Okay, so first of all, you have to know how you can gather information. If you are working in some XYZ company and if you want to gather information about that particular company only, so you can gather information. Okay. What is Google docking and Google hacking? Google hacking, it is not hacking Google servers. Google hacking is using different Google operators to effectively optimizing search results. So I will tell you the different kinds of parameter which we can use to getting information which we needed, okay, in optimized manner. It also evolve using Google to identify vulnerability into website. So we'll have that one website which I have and will perform one kind of attack. Okay. There would be a website with the login page and the password. We'll have a SQL injection into that website. And what is actually a SQL injection? I'll tell you everything in further when I will actually perform that kind of attack. Okay. So results are highly customizable and all websites content is exposed as Google. So we'll get a different kinds of content if how we are actually entering our words into Google. Okay, we'll have a sensitive data, also sensitive pages which wouldn't be directly viewed by anyone if he is accessing that Google with the traditional manner. Okay, so you have to know if you want to get any pages which is not visible by any normal person, you have to come to know how you can perform Google docking. Okay, even after sensitive pages are removed, they'll be stored in the Google caches. Okay, it is storing. What is Google hacking? Google hacking is a term that refers to art of creating complex search engine query into order to filter through large amount of search result for gathering information related to computer security. Okay, guys, I want to ask one question. Could you tell me search engine which is other than Google? What are the different kinds of search engine other than Google? Bing. Bing and Firefox. pardon? Yahoo. Microsoft Edge, Exactly. Safari. Microsoft is Safari, and we can say Yahoo, DuckDuckGo, and all. There are many search engines. Okay. But why Google is so famous? So everyone use Google only for searching anything? Anyone? So because all the apps of Google's are related to each other. In PowerPoint can work while sending the Gmail. It works in the Google Cache. Okay. Yeah, you can say like everything, the software which you are using that is of Google only. So we'll use the search engine of Google only. And if I'm using Yahoo, then I have to use the any third party of that applications, web applications. Okay, so eventually we are using Google as our search engine. Okay, but there is Bing, Yahoo, and all. But the main reason we can say that
the information which Google crawl from different kind from its server. Okay, जैसे कि आप कुछ particular about your project you are searching. Okay, so Google, that result Google will give to you will not be getting that result with the different kinds of other browser out there. Okay, so as you can say, the information crawling, the technology of crawling, how crawl Google the data information through its databases, that is the main part. Okay, there are crores of thousands of websites over there. Okay, so it crawl the information through that website. So that coding and that technique which Google has, that is totally unexpectable, or I can say that is to the next level. Okay, so that information crawling technique is make Google different from others. Okay, you will not getting that kind of information with the help with the Bing or a Google. Okay, and this was the Google hacking. How it works, how Google docking is work. Google search indexes everything that is made public, included virtual notes and the information stored with the notebook in their search results. So we'll putting keywords to see different kinds of data into any particular website or any particular URL page and all. So Google is one of the most powerful database in the world. So you can say Google is most powerful database. Okay, it has all the information of everyone who is accessing Google data. Okay, information disclosure with the Google, private information it can disclose, remote admin information, configuration management and error messages, backup files also there, and public vulnerability, which are the public vulnerability out there available publicly on the Google. Okay, so this could be disclosure and technology profiles and all. How Google works. So there is a very simulation you can say or image. See, if I'm writing or searching any query on Google, so first of all, that query will go to Google Web Servers. Okay. So Google Web Server, what will do? It will pass the query to the index server. So वहाँ पे ये result access होगा. The web server send a query to the index server. The content inside the index server is similar to index in the back of the book. Okay. So here it will be the index like. So what is index? There is a mainly main topic is there. In like our textbook of 11th and 12th, in the index page, there is just chapter names. So if you are searching for foods, so there will be a section of food. Under that food section, there will be millions of websites. Okay, so first of all, it will go into that food section, into this index server. Are you getting? And then it will go to doc server, document server. So the query travels to the doc server, which actually retrieve the stored documents. Snipped are generated to describe each search result. Okay, so there are many documents available into this doc server, so that after indexing, if you are searching regarding the food, there will be a millions of website pages into this doc server, and the Google will crawl that all the information out there, and it will give you that beautiful result into your Google user systems, or you can say its desktop. Okay, so this is the basic way that Google using to gather information, or how Google works. You can say like this. Okay, the query will first of all go to Google server, then index server, then doc server, and after the doc server, it will reflect into your desktop or into your browser. Is it clear, guys? Yes, sir. Yeah. And what are the Google operators? So operator are used to refine the result and the maximize the search value. They are your tools as well as hackers weapon. Okay, so I will tell you the different kinds of operators. You can use that to operators as your tools or weapon also. Okay, so what are the operators? I'll tell to you. There are many operators which we daily basis use, and you will also start using these kind of operators. Okay, so you, as you can say
This is plus sign. Any special character you can call. This is any not. This is plus sign, hyphen, and this wave sign, dot, and this star, and double inverted comma, and or. This kind of, you can say, these are the basic operators, and these are the advanced operators. Okay, all in text, all in title, all in URL and phone book and all. There is, these are the advanced operators. So few of them, I'll tell you how you can use these few of them operators, and others you can try and test on the Google, as I will tell to you all the few of them. Okay. So basic operators are also there. This is plus sign, and this is minus, inverted comma. This is for wave, and this is dot, and this is any word wildcard. So these are the operators, and the what the operators called as, and how you can use that operator. So this, there is example like plus sign. So for force inclusion of something common. So for you are using that purpose, that plus sign. Okay, Google ignores the common words where how digit signal letter by default. So where there you can use that plus sign. So Google will not ignore that kind of thing, and you will have the desired result. Okay. So these are the basic operators which you can use. I'll tell you there are many other operators also. Like I'll tell you how you can use side operator. Okay. So anyone can, if I want to search any website from any country like China and Australia. So how can I search? Can you tell me? अगर से मुझे ऑस्ट्रेलिया की कोई भी वेबसाइट सर्च करनी है तो कैसे मिलेगी? हाउ कैन आई सर्च एनी वेबसाइट ऑफ ऑस्ट्रेलिया? एक्सटेंशन क्या होगा ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट का? डॉट एयू होगा. Yes. Exactly. So site, you can write over here AU. So the website which you'll be getting, that would be .au. Can you see? News.com.au, news.com.au, news.com.au. Just see on URL part. Okay, this is the headline you can say, and this is the URL part. Okay. So just see on URL, you are getting every website which is from Australia only. Are you seeing? And see, if I will open any kind of website, these are the totally legitimate website of Australia. Okay. And if I want to search any website of India also, we can search. See, there are many websites are coming from India, Maharashtra.in. So I think the most website that will come, that would be a government website on all. Okay, by nature cosmetic product. See. And here you can see the Maharashtra.in. Maharashtrians.in. Okay, if you want to search website for Pakistan, you can also search for Pakistan. Okay, here you are the website which you are getting Pakistan. Okay, which has the worst, you can say, GUI. And there are many other websites like defense.pk. So it is the government website of Pakistan. Is it clear? The site operator, how you can use site operator? Yes, sir. Yes, sir. Okay. There is other also operator which I will tell to you, file type. You can write down, or you can remember that first we learn that site operator, and second we are learning file type. File type. And if you want to search PDF only, PDF for anything. So can anyone suggest me any topic of your course and all? आप किसी अपने कोर्स का, या फिर कोई Descriptive भी जो, statistics. क्या, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स? Descriptive statistics. Pardon? Sir, descriptive statistics. Okay, descriptive statistics will say.
the descriptive statistics. Okay, so here that things you are getting, this is in PDF format. Can you see? See, this is PDF. Here you can see this is PDF written. So if I will put over here, press over here, the see directly PDF has been downloaded into my system. You can just open and enjoy your content. Okay, so this is the introduction to descriptive statistics. Okay, so were you looking for this only? No, sir. Okay, it is not descriptive statistics. So you can search according to you which really we need. See, this is PDF only. Okay, so if you want PDF or PPT and all, you can search for that. Like see, there is descriptive statistics in the PDF format, and it will be directly downloaded. You can download from here only, or you can just read out here. Okay, Yes, sir. Sir, file how to type search clear. for PPT? Okay, I'll also show that. So you'll have a different kinds of PPT. So जो भी PPT बनाने से they don't like, you can use this method to find already made PPT or uploaded by anyone. See, this is the descriptive statistics and the PPT here you can see. Is it written? PPT is written over here. Yes, sir. Means all these the links we are getting that all are PPT into PPT format. So as soon as you click on this, it will be downloaded into your system. It is not downloading. We'll see on this. See, directly downloaded into my system. I'll go to down oh, show in folder. So see, this is PPT format. So as soon as you will click on this, see, we are getting PPT. So you will not have to Yes, sir. burn your time in order to make your PPT. Okay. So I think मैंने आप लोग के काम की चीज बता दी है. Exactly. Yes, sir. Yes, sir. Sir, could you please show it again? Pardon. Again, Could you see please this. show it again? Okay, how I gather this PPT information. Yes, Okay, sir. see any topic suggest me. This was the descriptive enclosure, which I really don't know what was that. Anyone just you suggest me any topic? Data model. Data model. Okay, data model, are you saying? Okay, so there is data model and you want a PPT on that. So file type colon, you will put PPT. So you'll be getting PPT on that data model. Okay. So you just for download, you just have to click in this on this link and that PPT directly downloaded into your system as you can see. Okay. So that data model PPT is downloaded. Okay. Any PPT you can download. You don't have to just waste your time to in order to make that kind of PPT which you need. Okay. And you can search for XLS files also and PDF format also. Okay, there are examples which you can do. See, this is site. You can also look for the site and the PDF, which यहाँ पे अगर से आप दोनों ऑपरेटर एक साथ यूज करना चाहते हो मीन्स यू आर सर्चिंग फॉर डेटा मॉडल्स बट फॉर Australia. So what you will write over here, site colon Australia. So see, you will be getting data model which is from Australia into PPT format. Is it clear? And you can also download the text file also like txt if you'll put over here. Here we'll be getting text file. Okay, as you can see, these are the text file into this XLS into XLS format also. And there is one more beautiful operator which I'll told to you. In title means it is you can say it is also good to search any kind of data. Okay, so if you are putting in title over here, so if you want to search anything,
which contain title like this. So can anyone suggest your name? Can anyone tell me your name? Anyone? Okay, no problem. I'll write my name, Akash. Okay, so can you see the links which you are getting that contain Akash word? See, here there is Akash. In this link there is Akash. In this link there is Akash. And सभी का नाम आकाश नाम से जो भी है यहाँ पे you can see over here. So if you don't think your name is on Google, then it is wrong. Your name is also would be in Google. You just have to search for in title and Akash. You'll be getting different kinds of company and startups description over here which contain your names. Okay. And if there is anything you can search like in title, if it is you want to search for history. Okay, so this is history. So it will contain the history word. You'll be getting all the website which contain history. Okay, historical data or history evidence. And there is also advanced operator which you can use for in URL. Like if you'll use in URL means you'll be getting the URL which will containing uh, this history word, or I will use this IPSEC in URL. If you want to search for Indian history, Indian history. See, as you can see the URL part. You will be getting word history in the URL only. In the understand, you can see over here Indian history and all. And I'll put the single word in URL food. If I will put food, so you'll be getting this. You can see food option into URL. Here also food is there. Here also food would be there. Here see, and there would be a food word everywhere into every link that you will see. Okay, there is also all in URL which contain different types of things which you want to search. Okay, if you want to search for any kind of password and all, you can also search for that. So you'll be getting the URL would be containing the food word, and in URL, all in URL will search. We'll see how it is working. All URL containing password file. So you'll getting the there will be different kinds of password. You can say this is the password, forgotten password and all. There is also would be a for password uh, subdomain into this. Okay, you can use in text also operator to have a better search. In text means in text, and if you are writing over here cyber security in text cyber. So the word which will be getting cyber security. See here you will be also getting cyber, and this is cyber security again. This is cyber security again. दिस इज साइबर सिक्योरिटी अगेन. मीन्स अगर से आपको कुछ ऐसे सर्च करना है कि ये कौन कौन सी वेबसाइट पे ये कीवर्ड अवेलेबल है, तो जैसे पासवर्ड आपने किया फिर कुछ भी किया. ओके, या फिर आपने आपका नाम भी किया, तो कोई अपना नाम बताना चाहेगा? एनीवन? Ryan. क्या? पुष्कर कल किसी ने सजेस्ट किया था. ओके, सो सी ओवर हियर देयर इज पुष्कर, 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 and also there is Pushkar. Okay, so are you there, Pushkar? See, there is Pushkar, a lot of name on Google available. So you can search like this. Yes, sir. The website. Okay. So you the website containing Pushkar word you can search over here. Okay. And you can also get different kinds of login and all. See, if you have to just write in text colon,
login page. So you'll be getting, see, this is login, this is login, this is login. You'll be getting login word only. This is login. Okay, so like this, you can search. And there are many other examples which you can also use. Advanced operator like link also you can use. Okay, so just write link over here, and you can just over here write food. You'll be getting different URL containing food link and food and all. So it is working like that. See over here you can see food link, and it is a bit highlighted among this word. Okay, so like this you can use this also. There is also info related and define also. So define network security if you are using. Let's see. अगर से आप network security if you are searching, so you will be getting website containing network security word, network security. Okay, so वहां पे आपको उसका definition दिखेगा, जैसे आप देख सकते हैं network security का, क्योंकि आपने define operator you have been using. Okay, so you'll be getting, see, this is network security definition and all. Okay, see, this is network security. And if you want information about anything, you can use info. And if you want a link, you can use a link operator. Okay, and there is a many websites which you can use that website to learn about all the Google docking. Okay, and there is Google is everyone's best friend or your hackers. Okay, so Google helps everyone to gather information about different kinds of things which you need. Okay, information gathering and vulnerability identification are the task in the first phase of typical hacking scenario. Positive steal death. So hackers use different kinds of data with the help of this Google docking technique only. Okay, so there is no other, there are many tools, but this Google docking technique to gather information is also one of the, you can say, the step which hackers eventually take. गूगल कैन डू मोर देन सर्च, जिससे कि हम लोग सर्च करते हैं हम लोग उससे बहुत ज्यादा देख सकते हैं. ओके, इफ आई विल टेल यू हाउ मच percentage of internet we are using, can anyone know? See, it is much clear with this diagram. This is the surface web, and we are using just 4 to 5% with the help of Google and all. We are using just 5% of total internet. Okay, and there are other information stored in the deep web in the form of cloud storage and different kinds of data, document, financial records and all. And you can say 95% data are there which are not used by which you cannot access with the help of normal search engine like Google, Yahoo and all. Okay, which is also called as dark web. So can anyone know what is dark web and all? किसी को पता है? Okay, so do you have guys any question regarding this Google docking? No, sir. Okay, so we'll move further in our this today's session. So what are the web applications and what are the different security out there for web applications? So what is web application? Can anyone know? What is web and web application? So there are two words, web and web applications. Okay, so what are the applications? The application we usually use into our mobile phone, Android phone. Okay, जो हम लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यूज करते हैं.
Okay. And web means website. Okay, or you can say web server. Okay, or that application which we are using into web browser or web pages in the form of web pages, that you can say that are web applications. So, and the information or that what I can say, the example of web applications you can consider top 10 web applications. These are the top 10 web applications: Google Analytics, HubSpot, Vellum, Slack, Asana, Microsoft Office, जो हम लोग ऑनलाइन एक्सेस अगर से करते हैं तो ओके web applications. We write over here web application examples. So we'll getting different kinds of lists like Google Docs, Netflix, Basecamp. You can say the Facebook, Instagram. There are also web applications only. Okay, Flipboard, and there are BMW and all. Progressive web apps which you can see Spotify, Pinterest, Canva, Amazon, Microsoft Office Suite. These are the web applications. Okay, so clear what are the web applications? Yes. Okay, so now guys, there is a vulnerability into web applications. Can anyone tell me what is vulnerability and flaws and security risks and all? What is vulnerability? I think we might have discussion in earlier lectures. So can At high anyone risk. just pardon? Just one line, just Hindi में, English में, anything, just one line. What is vulnerability? Okay, no problem, guys. No, it's no one. Sir, One entering into a database. exactly, you can say like this also. Okay, so vulnerability is one kind of mistake or flaws into any kind of web applications. So you, if you are अगर से कोई वेबसाइट बनी है और उसके अंदर कोई vulnerability exist करती है, so what you can do is that you can use that vulnerability to enter into that website and you can have that access which is not given to regular user. अगर से आपको कोई प्रिविलेज या फिर कोई एक्सेस नहीं है वहां पे जाके कुछ एक्सेस करने का, तो इफ देयर इज vulnerability exist and if you found that and if you're using that vulnerability to access that privilege, so that is vulnerability means you are exploiting that vulnerability that is existing into web applications. Okay, so OWASP, what is OWASP will I'll tell you. So OWASP full form is Open Web Application Security Project. So Open OWASP Web Application Security Project. So this is the, you can say, community and this is, you can say, the groups which disclose the top 10 vulnerability. अभी जब वेबसाइट बनी है तो उसके अंदर बहुत तरह की vulnerability होती है, हजारों तरह की vulnerability होती है. ओके, बट व्हाट आर द टॉप 10 अमंग देम, जो सबसे ज्यादा वेबसाइट में पाई जाती है. ओके, कि ये वेबसाइट में ये फ्लॉ हो सकता है. ओके, like in our house there could be many ways to enter our house, but what are the main way? That is our door. Okay, so यहाँ पे भी many, you can say, many vulnerability मिलती है, but these are the top 10 only which you can find in almost every website. Okay, so these and WASP they update their result in after 3 to 4 year every. Okay, so this was the 2017 result and this is 2021 result. So as we can say, there is exchanging of positions like injection vulnerability was the first priority in 2017. In 2020, injection came in the third position. Okay, means that any other vulnerability taken that place. Okay, so it happens that some vulnerability will go down, some vulnerability will go up. Okay, so clear OWASP top 10. What is this? So OWASP top 10 means top 10 vulnerability which exist or which that attackers are finding over the year. Okay,
Among them, what are the top 10 which the attackers can easily found in almost all the websites? Um, So this is web application security, PPT, the purpose and what are the credit goals and everything. We'll see one by one what is OWASP. So Open Web Application Security Project. This is the official website which you can refer to read further more thing about OWASP. Okay, 100 of volunteer expert from around the world. Okay, top 10 project you can say. And here you can say there are a lot of vulnerability, like which are the most vulnerability that researchers are finding into web applications. So which is more, can anyone tell me which vulnerability they found more? Cross-site scripting. Cross-site Exactly, the scripting. cross-site scripting. Okay, so what is cross-site scripting? I'll will have the demo. I'll tell you the demo how you can find cross-site scripting. Okay, on our demo website. Okay, what is cross-site splitting and how they are finding that, and what is the second most finding of vulnerability in? SQRL injection. Okay, so SQL injection, I think that is 13.2%, and before that there is 13.86% information leakage. Okay, so we'll take a cross-site scripting and in SQL injection in depth. Okay, we'll learn how they are, what is SQL injection and what is the cross-site scripting, and we'll have a deep discussion on that. Okay, so as you can see, there are the percentage of the vulnerability that are they found top five. So first was the XSS and second was the SQL injection. Okay, how bad it is. So you can see there is a brute force number of vulnerability. First of all, I think tell you, there is the vulnerability 0.04% number of sites 66, and they found this vulnerability into 66 website. Okay, और इसकी परसेंटेज कितनी होती है एक वेबसाइट में मिलने की 0.21% होता है. Okay, and if you are finding this website into different this vulnerability into different website, these are the top 10 list. Okay, so first is XSS cross site scripting. Okay, so what is XSS and what are the different types of XSS and how you can find XSS? We'll have discussion on that. So as you know, in the list of OWASP top 10, XSS is the topmost one. Okay, XSS almost website में exist करता है क्योंकि वो सबसे ज्यादा मिला है. Okay, तो आप कैसे ढूंढ सकते हो? For that, we'll see the practical part, like I'll close all this tab which I don't need. Okay, is it on recording mode? Yeah, it is recording mode. Okay, so for the demo purpose, you will need to have that your OWASP broken web application. What is OWASP broken web application? I will you can say the web application which is much vulnerable. एक ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर दुनिया भर की सभी मिस्टेक्स बना के रखी है ताकि जो अटैकर्स लोग होते हैं उस पर प्रैक्टिस कर सके. ओके, so you can found this open web applications. So accesses कैसे find करना है? So first of all, for that you have to open a VMware browser and you have to download open a broken web OWASP broken web application security OWASP broken. So how you can download? I'll tell you. I already have downloaded.
OWASP BWA download. Okay, you have to go to this first option and you can download from here. This would be a 7-zip file. You just have to extract that file. And what you will do, you have to just go to file and you can have to open that, and the extracted part, what you have to just select that part and you have to open that. Okay, this is not that I think that is different. Where it is, I think, see, it is here. So you have to just select this option and you have to open it. This would be downloaded into your virtual machine. Is it clear how you can download OWASP Broken Web? Yes, sir. Okay, so you can easily download from here. And the other thing which you need is that Kali browser, or you need Kali browser, or maybe hoga to be fine, but if you have, then it will be good. So just open that machine, OWASP Broken Web, as I already have opened. See, this is Broken Web application. Here, the what you can see, the username and the password, it is asking for the login. So I already have login. What would be the username and the default password? Default password is wasp bwa and the username is root. Okay, can you see the second last line? There is written in all these cases you can use this username root. Okay, let me close this machine. I'll open in front of you, then you'll have a better understanding that how you can access this machine. You have to just download and install into your browser. So you have to just double click on this and you can power on this machine. Okay. So with the help of this, you can set the hacking environment where you can practice all the different kinds of vulnerability. Okay. Or even top 10 which are existing, you can have practice of all that thing. This machine is starting. See, what is it asking? Can anyone read? OWASP login, it is asking. Okay. So read just second line option. What is username? Anyone tell me? Just read their second last line. Root. Exactly. The username is root. And what is the password? OWASP BW. Exactly. OWASP BWA. Okay, just enter it. You will be getting here the IP address. Okay. So what is the IP address? Can you see? There is one IP address 192.168. Can anyone tell me? In the last third, नीचे से तीसरी या चौथी लाइन में एक आईपी एड्रेस दिख रहा होगा. 101. Yes, sir. एग्जैक्टली. सो वो आईपी 101. एड्रेस, वो आईपी एड्रेस आपको ब्राउजर में डालना है. तो यहाँ पे जाना है आपको ब्राउजर में. तो कोई मुझे बताओ क्या है वो. 192.168.0.101. one. ओके. सो आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा. ओके, सो दिस इज वेब एप्लीकेशन वेयर यू कैन प्रैक्टिस ऑल द थिंग. यहाँ पे आपको बहुत सारे बाकी एप्लीकेशंस हैं. ओके, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको DVWA भी दिख रहा होगा. कैन यू सी डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशंस. So you have to go on this. So it is asking for username and the password. So I think the username is admin and password is password only. No, username is admin. Okay, so just close everything. So यहाँ पे guys आप different जो भी OWASP top 10 के थे ना, आप सबके प्रैक्टिस कर सकते हो. हम लोग अभी क्या यहाँ पे देखने आए थे? कौन सा वल्नरेबिलिटी जो एकदम टॉप 10 में था, फर्स्ट वाला? XSS. एक्सेसेस हम लोग देखने आए थे. तो यहाँ पे आपको एक्सेसेस दिख रहा होगा. कैन एनीवन से सी एक्सेसेस in the left panel? There would be accesses. So there is accesses reflected, accesses stored. Okay.
Can you see? See, this is XSS reflected, XSS stored. Okay. And there is a, see, there is a logout option, and this is security. यहाँ पे आप वो सारी vulnerability का you can do have practice of all that. Okay, or you can set your security label. Okay, जैसे कि आपने मान लो लो पे सेट किया है, तो आपको थोड़ा इजी में सारा ये जो वो DBWA के सारे लैब्स है, यू कैन सॉल्व देम इजीली। इफ अगर से आपने मीडियम पे किया है तो थोड़ा थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन बढ़ जाएंगे, थोड़ा हाई हो जाएगी सिक्योरिटी। एंड जैसे मैं इसको हाई करूंगा ये सबसे हाई हो जाएगी। ओके, आर यू गेटिंग? Yes, sir. ओके, आप मुझे बता सकते हो अगर से इनकेस इफ इट इज गोइंग बाउंसर एंड ऑल, आई विल हैव अ डिस्कशन इन रूट लेवल, और आई विल हैव डिस्कशन बेसिक थिंग of this. Okay, so we have to learn what is XSS. So there is something, so I'll tell you what is exactly XSS. This is the machine and which I'm accessing into browser. So first is XSS cross-site scripting. Okay, so here is your code is a part of your security parameter. Okay, so the code is perform the security, we can say the security part very important, because everything that depend for that web application is the code which the coder has been written. Okay, so it's very important to have a better coder if we are try to make any kind of web applications and all. Okay, so the coder should have the knowledge of different kinds of things. Okay, so what is XSS? So first of all, the definition is XSS flaws occur whenever the application take users supplies data and send it to the browser without first validating or encoding the content. मतलब जब भी जहां पे भी आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा, सर्च का ऑप्शन आपको कहाँ कहाँ दिखता है, वेयर यू कैन फाइंड द सर्च ऑप्शन, या फिर आपको जगह पे भी कुछ लिखने का मिलता है और आप वहां पे इसको सर्च कर सकते हो। आप अगर से किसी वेबसाइट पे जाते हो तो वहां पे कमेंट का ऑप्शन आता है, या फिर Yes, आपको वहां पे आपको सर्च का ऑप्शन दिखता होगा कि वहां पे आप वेबसाइट की डिफरेंट चीजों को सर्च कर सकते हो। ओके, sir. so accesses allow attacker to execute a script in victim browser which can hijack user session, deface website and possibly introduce worms. Okay, so accesses का अटैक परफॉर्म करके ये सारी भी चीजें हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल accesses के तीन टाइप्स होते हैं। ओके, कौन कौन सा? फर्स्ट है स्टोर्ड accesses, सेकंड है रिफ्लेक्टेड accesses, and third one is DOM accesses. Okay, so what is stored? The injected code is permanently stored. Okay, जो भी हम लोग यहाँ पे कोड डालते हैं इसमें एक्सेसेस में, वो डेटाबेस में जाके स्टोर होता है, हो जाता है, या फिर वो डेटाबेस में होगा, मैसेजेस फॉर्म में होगा, या फिर डिजिटल लॉक के अंदर होगा। रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस में क्या होगा? अटैकर दैट आर रिफ्लेक्टेड टेक सम अदर रूट टू द विक्टिम through an email or bounce of some other servers. Okay, so reflected access will reflect on that web page that will not stored in the database. And what is DOM injection? Injected code manipulate the Java script code or variable rather than HTML object. So we'll have discussion on this. Okay, in this the injection, the code will be manipulated. Okay, the JavaScript which is there, that will be manipulated. Okay, so we'll when solve will solve that lab, will see that what is actually, and you can see the example. There is a example. So instead of example, we'll have a directly uh, practice on that DBWA. Okay. So what when access occur when attacker can manipulate the web application to send malicious script to the third party. Okay, so this accesses happen when the attacker is manipulating web browser to send malicious script to any other one.
This is usually done when there is a location that arbitrary content can be entered into search, such as email messages, free content. So जहाँ पे आपको भी ओपन सर्च बार का ऑप्शन दिखता है, जहाँ पे आप कुछ भी इंटर कर सकते हो, वहां पे मेनली एक्सेस फाइंड किया जाता है. ओके, so we'll see first practical. Let's see. So this is my web browser and this is व्हाट इज योर नेम. ईयर मैं यहाँ पे कुछ भी मैं इंटर कर सकता हूँ, 1 2 3 रूट वगैरह भी यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ. रूट डाला, सो यहाँ पे मुझे क्या मैसेज लिख के आता है, हेलो रूट. ओके, या फिर कोई अपना नाम बताएगा तो उसका भी नाम यहाँ पे आएगा, जैसे पुष्कर या फिर कुछ और डाला, आकाश डाल के देखते हैं एक बार. आकाश डाला तो हेलो आकाश आएगा. सो जस्ट इसका कितना काम है, यहाँ पे मैं कुछ भी डालूंगा मुझे वो इंटर करके आएगा. यहाँ पे अगर से उसका सोर्स कोड देखते हैं तो यहाँ पे जो भी नाम डालूंगा वो जस्ट मुझे प्रिंट करके देगा, वो बड़े में प्रिंट करके देगा. हेलो के बाद वो नाम यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा. ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक कोड यूज कर सकते हैं, जावा का स्क्रिप्ट पता है या फिर जावा टैग, वी कैन यूज दैट आल्सो ओवर हियर. ओके, तो अलर्ट ऑप्शन किसके लिए यूज होता है पता है किसी को, पॉपअप कराने के लिए. सो यहाँ पे हमारे पास एक कोड होता है, अगर से डायरेक्टली इफ यू आर एंटरिंग दैट कोड इनटू दिस हियर, यहाँ पे मेरे पास है नहीं लिखा हुआ, बट हाँ ठीक है, यहाँ पे आप जैसे ही स्क्रिप्ट ये लिखते हो, स्क्रिप्ट ब्राउजर में जाके मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रिप्ट, you have to write over here script and you have to use alert option, alert. कोई अपना नाम बताना चाहेगा, जस्ट नेम. अच्छा, हिमांशु. Okay, and you are closing that script tag with the help of this. Okay, so you have to just copy this thing and you have to paste over here. Himanshu, you have been hacked. So can you see there is a pop-up of Himanshu, you have been hacked. Can you see? yes, sir. Yes, sir. Okay, so this, if you are getting this kind of pop-up, it means that website or that web page, you can say that that is vulnerable to, that might be vulnerable to accesses. Okay, कौन से टाइप से vulnerable हो सकता है वो, फर्स्ट वाला क्या था, रिफ्लेक्टेड. ओके, सो ये accesses रिफ्लेक्टेड से vulnerable हो सकता है. ओके, सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस कोड. यहाँ पे आप जो भी डालोगे वहां पे वो रिफ्लेक्ट करके आएगा. अलर्ट के अंदर आप कुछ भी डालो, जस्ट यहाँ पे जस्ट कुछ भी कैपिटल में आकाश भी आप डालोगे तो भी आपको यहाँ पे लिख के आएगा वो. ओके, सो अगर इस तरह से, अगर से आपको पॉपअप मिल रहा है, कहीं पे भी आपको सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है या फिर कुछ भी इंटर करने का ऑप्शन दिख रहा है, जहां पे आपको प्रिंट करके रिफ्लेक्ट होता है, जैसे कि रिफ्लेक्ट कहाँ कहाँ पे होता है, आप कहीं पे कमेंट डालते हो, याद है, आप इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे कमेंट जब डालते हो तो आपको सबको दिखता है, इवन यू कैन सी दैट कमेंट एंड इवन योर फ्रेंड कैन आल्सो सी दैट कमेंट. Okay, so instead of comment, you can write that JavaScript or script tag. Okay, to know whether that a particular website is vulnerable to reflected accesses or not. Okay, so this was the first, and if I'll increase the security level of this, so this is on the low security. If I move to medium one and security level is set to medium level, and now we'll see the security reflected, and if we put this script, so see this is not getting pop-up, तो यहाँ पे मुझे पॉपअप नहीं दे रहा है. ओके, क्योंकि सिक्योरिटी लेवल बढ़ गया यहाँ पे थोड़ा. ओके, इसके पहले वो लो पे था, नाउ इट इज ऑन मीडियम. तो यहाँ पे वी हैव टू डू समथिंग अदर टू हैव दैट पॉपअप.
ओके, तो पॉपअप हम लोग को यहाँ पे कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो दिख रहा है कोड जो हमारे पास था, इसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। सो हाउ वी कैन डू दैट काइंड ऑफ चेंजेस? मैं यहाँ पे एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। एक्सेसेस विल कीप इट लाइक दिस। ओके, सो फर्स्ट वाला मेरा क्या था, ये वाला था। सो ये बट मेरा यहाँ पे नहीं ले रहा है, यहाँ पे जब भी मैं ये वाला स्क्रिप्ट टैग इंजेक्ट कर रहा हूँ, मुझे पॉपअप नहीं दे रहा। इट इज शोइंग दैट, क्यों नहीं दे रहा है ये? क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ी सिक्योरिटी इसकी लेवल बढ़ गई है। और इसका अभी सोर्स कोड देखते हैं तो क्या दिखेगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो स्क्रिप्ट को है ये लोग ने क्या करके रखा है, ब्लॉक करके रखा है, कि मतलब आप इस तरह से रिप्ले स्क्रिप्ट यूज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट यूज दिस काइंड ऑफ स्क्रिप्ट। ओके, और यहाँ पे सो व्हाट यू कैन डू इज दैट, अगर से मैं इस तरह स्क्रिप्ट को इस तरह से यूज नहीं कर सकता, सो मैं यहाँ पे पी कैपिटल करके तो यूज कर सकता हूँ ना। नाउ यू कैन, आई विल कैपिटल दिस पी। नाउ विल ट्राई दैट वेदर वी विल एबल टू यूज और नॉट। विल कॉपी दिस एंड विल सी ओवर हियर, एंड यहाँ पे हम लोग इसमें से किसी भी एक अल्फाबेट को कैपिटल में कर देंगे, एस सी कैपिटल आर कर देंगे, एंड नाउ नाउ विल ट्राई this whether it is reflecting or not. See, here we can see there is Himanshu reflecting. Okay. So यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ा, जस्ट कोई बताएगा हमने क्या किया? पहले वाला स्क्रिप्ट वो इट वाज नॉट टेकिंग, क्योंकि वहां पे स्क्रिप्ट जो था ना, ये पूरे टैग को वो लोग ने वहां पे मैं यूज नहीं कर सकता था। ये लोग ने इसको रखा था कि मैं इसको यूज नहीं कर सकता, ब्लॉक एक तरह से बोल सकते हो। सो जस्ट मैंने क्या किया, यहाँ पे उसको कंफ्यूज किया, क्योंकि यहाँ पे ये तो सिमिलर तो है ना इसके, यहाँ पे मैंने कैपिटल आर कर दिया। सो इट डजंट कंसीडर इट एज द स्क्रिप्ट टैग और एनी जावा स्क्रिप्ट, इट कंसीडर अ डिफरेंट थिंग, एंड ये इसने एग्जीक्यूट करने दिया। सो वी कैन सी पॉप अप ओवर हियर, इट मींस दैट इज आल्सो could be a vulnerable to reflected accesses. Is it clear that medium label? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now we'll solve this lab with the help of high level. Okay, अभी हाई लेवल में देखते क्या क्या सिक्योरिटी रहेगा। सो रिफ्लेक्टेड एक्सेस में फर्स्ट हम लोग ने जो डाला ये ट्राई करते हैं, ये लेगा क्या? आप लोग को क्या लगता है guys, लेगा ये? मुझे जस्ट पॉपअप चाहिए एनी हाउ। तो जस्ट No, sir. इंटर किया, पॉपअप लिया, नहीं लिया। ये डाल के देखेंगे तो पॉपअप लेगा। No, sir. ओके, बिकॉज द सिक्योरिटी थोड़ी उसकी इंप्रूव हो गई। देखो यहाँ पे नहीं ले रहा है, वो इसको पता चल गया कि यहाँ पे कैपिटल आ रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि इसका सोर्स कोड जब रीड करेंगे, सो वहां पे ये भी पता चलेगा कि जैसे यू कैन से HTML स्पेशल कैरेक्टर वो लेगा ही नहीं। ओके, इफ देर इज एनी काइंड ऑफ HTML character, it will not take that. So we'll have to do some other thing. So what we can do is that we can have a different method. ओके, यहाँ पे मैं एक तो सबसे पहले ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे सिंबल्स यूज नहीं कर सकता। ओके, अगर से मैं करता हूँ तो वहां पे वो मुझे जस्ट वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग विल नॉट वर्क, यहाँ पे जो अपना नॉर्मल जो स्क्रिप्ट है वो काम नहीं करेगा। बट हमें पता है कि वी हैव थाउजेंड्स ऑफ स्क्रिप्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी जस्ट नोटपैड में 2 लिखा है ना, ऐसे मेरे पास हजारों पड़े, हजारों। ओके, सो उसमें से एक मैं यूज करूंगा बॉडी वाला। ओके, सो मैं ये कौन सा यूज करूंगा, यहाँ पे आ, मैं बॉडी वाला स्क्रिप्ट, बॉडी टैग यूज करूँ, बॉडी वाला यूज करूंगा जावा स्क्रिप्ट। सो व्हाट आई राइट, बॉडी ऑन लोड अलर्ट एंड ALE अलर्ट। एंड आपको अलर्ट क्या कराना, अलर्ट मतलब जो आपको पॉपअप में दिखना चाहिए वहां पे बॉक्स के अंदर।
तो यहाँ पे आपको इनकेस क्या देखना है, यहाँ पे कुछ भी देखना है, यू हैव बीन हैक्ड देखना है, यू हैव बीन, ओके। तो यहाँ पे अगर से मैं ये अभी वहां पे पुट करता हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर कोई HTML का कोई कोड नहीं है ग्रेटर देन या फिर लेस देन का, इट इज जस्ट एन सिंपल जावा स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट है यू कैन से। सो इसको क्लोज करते हैं, अभी ये डाल के देखते हैं हमको पॉपअप मिलता है क्या। तो इवन दो वी आर नॉट गेटिंग दैट पॉपअप, okay, so I think there is some mistake. Alert, there is, I think the single inverted comma is there. Now let's see. Even though we are not getting that pop-up, so अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस के और भी बहुत सारे स्क्रिप्ट टैग देखेंगे गूगल पे से, ओके। सो स्क्रिप्ट टैग for access of reflected accesses, ओके। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे script tag as you can see over here. We'll go into some other website, or I will write over here JavaScript, okay. So I will try to get into any of this website and try to get any. There is also many. See, if we try to see this was working now, what is, but there is just a bit. We'll see different Java tag. See, as you can see, there is a script alert access and a script is there. So it was, we are getting this on the when the security level is low or medium, but when there is a high, the security वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ गई है, समझ रहे हो गाइस। तो वहां पे वो सिंपल चीजें काम नहीं करेगी जो हम लोग एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज किए थे ये लो में और मीडियम के अंदर, वहां पे यू हैव टू यूज द रेफरेंस थिंग, सी यू कैन यूज दिस, you can use this to have pop-up, even though it is not giving that pop-up. There are like this, there are many script tag which you can use to have that pop-up, okay. Now we'll also try again, once again. Let's see. सर वो कॉलर नहीं फेसिंग कॉलन एक बार मैंने सेमीकोलन पार्डन क्या बोल रहे हो, ये कॉलन मैंने एक बार हटाया के देखा, सर वो कॉलर ये ठीक है, लेके एक बार देखते हैं काम करता है क्या। We just want that pop-up. If we are getting pop-up, it doesn't mean lab has been solved. But if we are not getting, I will try the different thing. Like, see if I'll try this. Okay, एक काम करते हैं, इसका सोर्स कोड वापस से देखते हैं। यहाँ पे हम लोग को बता रहा है इसमें HTML स्पेशल कैरेक्टर एंड गेट नेम नल, ओके। यहाँ पे इज एम्प्टी ट्रू है, okay. So let's see some other script tag from here only, okay. We'll try, we'll use this body on load equal to alert. You've been hacked, and let's see if I'm closing this. It should work. I think there is some mistake. Okay, we'll see this whether it is working or not. This is the simple which will, I don't think it will take, because यहाँ पे ये स्क्रिप्ट को वो लोग डिनाई करके रखते हैं कि स्क्रिप्ट जिससे चीजों को लेगा नहीं, ओके। First we'll see that script access store also.
ओके, से हम लोग की एक्सेसेस जो स्टोर होते हैं उसके लैब को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इस केस में क्या होता है, यहाँ पे डेटा को स्टोर करता है। ओके, सो हाउ यू कैन सी दैट डेटा इज स्टोरिंग और नॉट। यहाँ पे अपने, जहाँ पे भी आप, यहाँ पे कोई आप फॉर्म भरते हो, जैसे कि आप कहीं पे गए तो वहां पे आपको HTML फॉर्म मिलता है भरने को। अगर से कोई लिंक मिला HTML फॉर्म है, इट मीन्स कि वो डेटा कहीं ना कहीं पे तो जा रहा है। ओके, तो जैसे कि आप कोई फॉर्म भर रहे हो, कोई इंक्वायरी फॉर्म है, कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म है, तो जहाँ पे आप कॉन्टेक्ट अस पे जीमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और आपका मैसेज डालते हो, तो आप वहां पे ब्राउजर में थोड़ी रहता है, वो सामने वाले डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाता है। जो भी ऑनर रहता है कभी भी ही कैन रीड। ओके, या फिर आपका कोई सबमिट फॉर्म है उसके अंदर आपने देखा और कहीं पे देखा है। एनीवन। यहाँ पे हम लोग इसका सोर्स कोड देखते हैं, तो यहाँ पे ये सारी चीजें मेंशंस हैं। ओके, कि यहाँ पे स्ट्रिंग फेसेस माइस्क्वेल एस्केप। ओके, सो वी विल सी दैट हाउ वी कैन सॉल्व दिस लैब। सो यहाँ पे अगर से मैं कुछ नाम डालता हूँ अपना रूट, और यहाँ पे मैसेज डालता हूँ, सो वी विल सी दैट हियर वी आर गेटिंग दैट थिंग। ओके, सो ये मैसेज मुझे क्या मिल रहा है, हाय एंड द नेम इज रूट एंड द मैसेज इज हाय। सो ये कहाँ पे स्टोर हो रहा है, इसीलिए मुझे मिल रहा है ना। यहाँ पे मैं टेस्ट डाल सकता हूँ, या फिर रूट वन डाल सकता हूँ, एंड यहाँ पे क्या डालूंगा, R1। लेट्स सी, सी यहाँ पे ये भी स्टोर हो रहा है। तो दिख रहा है गाइस, यहाँ पे जो डेटाबेस में स्टोर हो रहा है तो मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट करा रहा है, दिख रहा है। सो मतलब मैं यहाँ पे कुछ भी डालूंगा यहाँ पे स्टोर्ड होगा, मतलब जो भी मैं एंटर कर रहा हूँ स्टोर्ड हो रहा है। सो हाउ वी कैन एक्सप्लॉइट दिस। यहाँ पे मैं किसी का नाम लिख लिख सकता हूँ। हाउ वी कैन सॉल्व दिस लैब, आकाश। एंड यहाँ पे मैं सिंपल वही स्क्रिप्ट टैग लिख दूंगा, ये वाला। ओके, लेट्स सी whether it is working or not. Okay, so here we're not getting pop-up. Let's try once again. यहाँ पे मैं इसके जगह पे सम नंबर, इफ आई एम पुटिंग, यहाँ पे जस्ट मैं एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जस्ट मैं वन नंबर डाल देता हूँ। लेट्स सी, इट इज स्टोरिंग। ये सारा चीज जो भी मैं एंटर कर रहा हूँ ना स्टोर कर ले रहा हूँ। ओके, सो द अदर थिंग विच आई कैन डू इज दैट, यहाँ पे जो नेम होता है ना, इसको मैं इंस्पेक्ट कर सकता हूँ। इंस्पेक्ट करके यहाँ पे ट्राई करेंगे एक बार, जस्ट मैं इससे पहले ट्राई करूंगा। नेम में कितना लेटर तक लिख पा रहा हूँ, AKASH। उसके आगे मैं कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ, कैन यू सी। तो यहाँ पे इसके लेंथ को मैं बढ़ा दूंगा। सो वेयर इट इज द लेंथ, विल डबल क्लिक ऑन दिस। यहाँ पे जस्ट जब इसको मैं क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट मुझे डाउन में चाहिए, मुझे इसको इंस्पेक्ट करने का है ना, कि इसका कोड किधर है। तो यहाँ पे जब इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दिख के आएगा मैक्सिमम लेंथ कितना है, 30 है ना। तो इसको मैं बढ़ा के कितना कर दूंगा, 100। तो यहाँ पे मैं 100 तक का डाल सकता हूँ। ओके, दिख रहा है। सो उसका जो अभी मैं कुछ भी इंटर कर सकता हूँ यहाँ पे 100 तक का। नो नो, आई थिंक द बॉक्स का साइज बड़ा है, मुझे अंदर का मैक्सिमम लेंथ बढ़ाना है, ये जो दिख रहा है ये। ओके, सो अगर से मैं इसको 100 कर देता हूँ, अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, एज यू कैन सी, मैं उससे ज्यादा लिख सकता हूँ, पहले से ज्यादा लिख सकता हूँ। ओके, अब हम लोग ट्राई करेंगे वो यहाँ पे एंटर करके ट्राई करने का। सी, एज यू कैन सी मैसेज कैन नॉट बी एम्प्टी, बट मुझे पॉपअप तो मिला। ओके, यहाँ पे अगर से मैं कुछ और यहाँ पे ट्राई करता हूँ, मैसेज हाय। सो एज यू कैन सी दिस इज ऑल्सो एग्जीक्यूटिंग, यहाँ पे हाय की जगह ये डाल देते हैं, alert, will write over here ALE. Again we'll change this length from 10 to 100. Okay, so what is the 100? Okay,
सो यहाँ पे मैं भी जस्ट इंटर करता हूँ इसको एंड विल सी दैट वी आर गेटिंग पॉपअप और नॉट। ओके, यहाँ पे जस्ट मैं वन वन करके इसके अंदर 1 2 3 लिख देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैसेज एम्प्टी है, बट यहाँ पे मुझे पॉपअप मिल रहा है। इट मीन्स दैट we can getting that proper, then this website could also be that vulnerable to stored accesses. Okay, so is it clear what is stored and reflected? In reflected there is, it will not be then things like this storing, and in store there is be if you are writing anything. Okay, if you are accessing your username password and all, and if you are typing any messages, or if you are doing any comment, so that is storing in the database, so it is something that is related to database only. Okay, so what you got the basic difference between reflected and stored? Yes, sir. Yeah, so we'll have further more vulnerability like SQL, how we can perform the SQL injection and all. We'll see that because the SQL injection was also into the top 10 only. I think it was the second one. Exactly. Yes, sir. So how we can perform the SQL injection? As you can see over here, there is a one web application called as a web or OWASP bricks. Okay, which is very much vulnerable. So you have to go to this login page. So as you can see, there is a login page. मैं यहाँ पे अगर से कुछ भी लिखता हूँ root और यहाँ पे root लिखता हूँ, लॉगिन हुआ क्या? नहीं हुआ ना? यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ जैसे कि एडमिन, एडमिन लॉगिन हुआ, लॉगिन सक्सेसफुल, क्योंकि लॉगिन नाम का यूजर ऑलरेडी है यहाँ पे, बट मुझे मान लो पता नहीं है, तो कैसे लॉगिन करेंगे? ओके, या फिर मैं टेस्ट लिखता हूँ, जस्ट इफ आई विल राइट ओवर हियर टेस्ट वन और टेस्ट वन। ओके, सो यहाँ पे मुझे रॉन्ग यूजर नेम या फिर पासवर्ड शो करेगा। तो व्हाट वी कैन डू इज दैट, so we'll we can do over here SQL injection. So what is SQL injection? So can anyone tell me what is SQL? What is SQL? Structured query language. Very nice. Oh, yeah. So this is the language you can say which used to manage that database content, और डेटाबेस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होता है कैसे स्टोर्ड होता है, वो एक रो फॉर्मेट में होता है, रो कॉलम में होता है। एग्जैक्टली exactly? Yes, sir. तो वहां पे जैसे कि we'll see example on this Google SQL database will have an image। तो यहाँ पे सारा डेटाबेस के फॉर्मेट में सारा इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, जो भी हम लोग मेंशन करेंगे। जैसे यहाँ पे इसका जो भी यूजर नेम और पासवर्ड, सो यूजर नेम पासवर्ड का एक लिस्ट होगा कि जहाँ पे यूजर नेम लिखा होगा, जैसे यूजर नेम मेरा एडमिन है तो उसका पासवर्ड एडमिन होगा। फिर सेकंड पे दूसरा यूजर नेम है एडमिन टू, तो उसका पासवर्ड एडमिन टू, या फिर उसका जो भी पासवर्ड होगा। एग्जैक्टली। बट यहाँ पे मैं हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वी आर पुटिंग दैट 1 = 1 ऑलवेज ट्रू होता है। ओके, Yes, sir. we know that 1 = 1 is always true. So what we can do is that वहां पे we are injecting the SQL injection, or we are malicious SQL script we are injecting over here to log in into this website, because I know this could be vulnerable to SQL. Okay, so this is, you can say, uh, SQL script. We will just you have to enter this over here, and what you will see that login is successful because 1 = 1 is always true. Okay, or there is also one more script which you can use, admin, I think. Let me write admin, or and there is, you will find many SQL injection cheat sheet and all.
should be, I'll tell you how you can find SQL cheat sheet. You will find there is a lot of SQL injection, SQLi, you can see over there. Okay. So what is SQL injection? So वहाँ पे SQL manage database and database stored everything. Okay, जो भी हम लोग वहाँ पे enter करेंगे, so that thing will be added into that database. Okay. So SQL is a language which manages the database. And what is SQLi? SQLi is a SQL for database, and I means injection. So we are, it is SQLi is a technique to enter into that website or into that username password without having actual username or the password. Okay. And what's the purpose of this? Why we are doing this kind of thing? अगर से मैं valid user नहीं हूँ, even though if I'm trying to log in into this website or authenticate this website, so it means that वहाँ पे मैं कुछ भी information ले सकता हूँ. Okay, like username, password, cookies, session IDs and all, I can steal from here. Okay. तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया, ये सेम चीज वी कैन ट्राई, यहाँ पे भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं। डैम वल्नरेबल एप्लीकेशन पे भी, DVWA पे भी ये ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज एसक्यूएल इंजेक्शन। तो यहाँ पे अगर से मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन डालता हूँ तो मुझे सेशन आईडी, कुकी आईडी, ये सब भी मुझे यहाँ से मिल सकता है। ओके, सो दिस वाज द एसक्यूएल इंजेक्शन एंड देयर आर फ्यू मोर थिंग्स व्हिच वी शुड लर्न in this. I think directory transversal attack, should I told you? नहीं ना, नहीं हुआ ना। No, sir. तो ये देखते क्या होता है। यहाँ पे आपको आपके वही वेब एप्लीकेशन VWA पे जाना होता है। इसके अंदर क्या होता है, डायरेक्टरी ट्रांसवर्सल अटैक ऑल्सो नोन एज डायरेक्टरी ट्रांसवर्सल अटैक, ऑल्सो नोन एज पाथ ट्रांसवर्सल अटैक। ओके, यहाँ पे आई थिंक द मिस्टेक इज दैट दिस इज पाथ ट्रांसवर्सल अटैक। Okay, and dictionary browsing attack also this is. Okay, so we can call the directory transversal attack to path transversal attack or directory browsing attack. इसके अंदर क्या होता है, अटैकर कैन एक्सेस द फाइल ऑफ डिफरेंट डायरेक्टरी। ओके, जैसे कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट की बहुत सारी इंफॉर्मेशन आर देयर इनटू दैट बैकएंड। Okay, so how if the attacker is easily able to find that backend file with the help with the help of this browsing technique or a browsing attack, dictionary directory browsing attack, so that if that website is vulnerable to browsing attack, then it's simple that attacker can see every website backend pages of that website. Okay, so if we consider will this practical on OWASP Materiality Day, so you have to go this Materiality Day. This is also one of the, what you can say, website which is very vulnerable. So you have to go to OWASP 13, and you have to go to on security misconfiguration option, and there you can see directory browsing. So you have to click on directory browsing. What is directory browsing? You can see over here. Some web server are misconfigured and allow directory browsing. Okay, so ये किसकी मिस्टेक होती है, वेब सर्वर की मिस्टेक होती है। लाइक दिस इज द वेब सर्वर मेटिलिटी डे। यहाँ पे डायरेक्टरी ब्राउजिंग को ये लोग ने इनेबल करके रखा है, डिसेबल करके नहीं रखा है। ओके, सो अगर से डेवलपर जो होंगे ना, दे शुड नो दैट हाउ दे कैन disable the directory browsing, but now in our case it is enabled. So we'll use this vulnerability to see files of these websites. Okay, this is an easy mistake to make while most site disable directory browsing on it. Most site जो होती है almost सब disable करके रखती है, but for learning purpose on materiality that is on in enable mode. Okay, Materiality Day seems to disallow the directory browsing on the root pages. Try to browsing on, these are the link where you can find the different Materiality Day. We can, what you can say, any. And see, this is the directory browsing. Now we'll solve the lab. What you can see, can you see that URL part, Materiality Day, and there is also the other thing. So ये बनाया ही उसी तरीके से है कि इसके अंदर ब्राउजिंग डायरेक्टरी अटैक जो है यू कैन परफॉर्म ओवर हियर। सो यहाँ पे आपको ये जो इमेजेस वगैरह दिख रहे, तो ये सारे में बैकग्राउंड में इसके कुछ तो पेजेस होंगे। ओके,
तो यहाँ पे क्या करना होता है आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतने सारे दिख रहे होते, PHP, बग ट्रैकर, बग रिपोर्ट, ऑल दिस थिंग, यही सारे इमेजेस के फॉर्म में कहीं ना कहीं स्टोर होंगे सर्वर के अंदर, मान लो डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड है, एंड वो मुझे देखना है। तो मैं जस्ट इसको क्या करूंगा, यहाँ से कट करूंगा और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, इमेजेस। इफ यू आर राइटिंग इमेजेस ओवर हियर, यहाँ पे आपको इमेजेस का बैकएंड के जो भी है, जिसका एक्सेस यू शुडंट बी, बट इवन दो यू आर गेटिंग दैट एक्सेस, बिकॉज दैट इज, दिस वेबसाइट इज वल्नरेबल टू डायरेक्टरी ब्राउजिंग एक्सेस। ओके, या फिर डायरेक्टरी ट्रांसवर्सल अटैक। So you can go to parent directory or knob png, अगर से आपको बहुत सारे photos, this is font, what you can say, this is knob png, and what you can see over here, there is also this sign, and if you are getting to root directory, see, you have arrived over here, you have to just put over here images option, and you can see a lot of images over here. OAS png you can see. Okay, and what the other thing you can do is that you can use include option into this. Okay, include है या फिर कुछ और है। इसके बाद guys, how you can access dark web and how you can increase your Instagram likes and followers, we'll see that. Okay, so यहाँ पे आपको क्या यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे मटेरियल इंक्लूड्स यूज कर सकते हो, कंट्रोल सी, मटेरियल इमेजेस, ओके, यहाँ पे मैं इसको कट करता हूँ, यहाँ पे मटेरियल डे में जाते हैं, इसको कट करो यहाँ से 192, अगेन विल गो टू 101, so this is our page, we'll go to maternity day, and यहाँ पे आपको images लिखना है। Okay, so here you will be getting all the different kinds of PNG images, as you can see, and if you want to write, see the PHP files of this website, so what you can write over here, includes, okay. Sir, what are the uses of these images? See, with the help of this, you will able to find the pages which you cannot access by what you can say, by not accessing that, browsing that website with the normal use. Okay, जैसे आपने कोई वेबसाइट बनाया है, उसके अंदर आपने अगर से कुछ ऐड किया, इमेजेस, फोटोज, वीडियो, सो आपके वो डेटाबेस के अंदर होगा, दैट थिंग वुड बी इन योर डेटाबेस। ओके, बट अटैकर विल ट्राई टू सी दैट डेटाबेस कि आपने क्या क्या यूज किया, वहां पे क्या क्या इमेजेस है, क्या क्या पीएनजी है, so he can do things like this, he can change the URL like this, and he can see that kind of thing which you have used into your database. Okay, so अभी जैसे PHP files मुझे देखनी है, तो मैं क्या वहां पे एंटर करूंगा, includes, let's see whether we can see or not, see, you can see a lot of PHP files over here. Okay, so अगर से यहाँ पे मैं क्यों देख पा रहा हूँ, because this website is vulnerable to directory transversal attack. Is it clear? जो कि मुझे ये सारी PHP फाइल्स जो होती है देखने का परमिशन नहीं होता। जनरली आप किसी और वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे आपको नहीं होगा। ओके, बट दिस वेबसाइट इज मेड फॉर दैट डेमो पर्पस, यू कैन से, वेयर यू कैन सी ऑल दिस PHP फाइल्स। Okay, because this website is intentionally they make to vulnerable to directory transversal attack. Okay, so is it clear? See here, Yes, sir. there is login PHP form, and there is also, see, there is .php .php files, and you can see the last modified date, and there is a description also, and so like this you can perform this directory transversal attack. So this is the path where you have to go. We have to go to 13 security misconfiguration and directory browsing attack. So these are the URLs we can use, and for PHP files you can use this. ओके, और यहाँ पे क्या होता है, मान लो जैसे कि यहाँ पे मटेरियल डे में मैंने क्या क्या दो चीज चेंजेस किए, बता सकते हो? मैंने चेंजेस क्या क्या किए?
मैंने कौन से दो चीज को देखा, जस्ट इमेजेस को देखा, और पीएचपी फाइल्स देखने के लिए मैंने कौन सा ऑप्शन यूज किया वहां पे, इंक्लूड। ओके सो और ऐसे आप क्या क्या देख सकते हो, ये सारी चीजें आप यहाँ आ, आपके पास टूल्स भी होते हैं जिसके साथ आप ऑटोमेटिक टूल से भी देख सकते हो, यू कैन से। सो I'll show you what are the options you can use into directory transversal attack. See, this is the option where you have to go. Just remember this path, USR share word list DIRB. USR share word list. So you have to go to. First of all, how I will switch from normal user to root user. What is इस यूजर को क्या बोलते हैं, यहाँ पे डॉलर साइन है, तो ये कौन सा यूजर है? Anyone? यहाँ पे मुझे DIRB दिख रहा है, जस्ट मैं उसके अंदर भी जाऊंगा। यहाँ पे मैं अगर से बिग डॉट टीएक्सटी को रीड करूंगा, सो हाउ आई कैन रीड बिग डॉट टीएक्सटी, कैट बिग डॉट टीएक्सटी को रीड करूंगा। सो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस मैं यूज कर सकता हूँ अलग अलग वेबसाइट के अंदर ना, जूम हो गया, जोन्स हो गया, ये सारे ऑप्शंस भी आई कैन यूज टू इफ दैट वेबसाइट इज वल्नरेबल टू डायरेक्टली ट्रांसवर्सल अटैक। Okay, these are the options which you can use, like to gather the information of starting with the WWE or the TMP, temporary files. If the database is storing temporary files, you can get that files also. Okay, so is it clear what is directory transversal? Yes, sir. Okay. And what are the other things? Google Docking is I have done. See, there is a very interesting topic which I will tell to you. Grabbing IP logger. What do you mean by this? IP logger. This is very good website that how you can gather information of any user. Okay, so I'll open this link. किसी ने ग्रेविफाई आईपी लॉगर यूज किया? एनीवन यूज किया किसी ने? ओके, नो प्रॉब्लम गाइस, यू हैव टू, यहाँ पे जस्ट आपको एक लिंक ओपन करनी होती है, जैसे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसका भी, या फिर आप यूट्यूब का भी कर सकते हो। ओके सो यहाँ पे आप यूट्यूब पे जाओ और उसकी में आपकी जस्ट एक लिंक आपको लेनी है। ओके इसकी आपको मान लो कॉपी आपने लिंक किया और यहाँ पे आपको वो लिंक पेस्ट करना होता है। ओके सो यहाँ पे आप उसको इनकोड कर सकते हो। ओके यहाँ पे आप एक यूआरएल बनाओगे, नॉट इनकोडिंग। यहाँ पे आपको जो यूआरएल मिलेगा, यू हैव टू सेंड दैट यूआरएल टू योर फ्रेंड। ओके सो यहाँ पे देखो, ये जो यूआरएल है ना, आपको किसको भेजना है? आपके फ्रेंड को भेजना है। दिस इज आई कैन सेंड टू एनीवन। तो यहाँ पे मुझे उसके डिटेल्स मिलेंगे कि उसके डेट एंड टाइम, कब उसने ओपन किया, उसका आईपी एड्रेस क्या है, कौन सी कंट्री में है, और होस्ट नेम क्या है, आईपी आईएसपी क्या है, एंड डिफरेंट थिंग। ओके सो मैं किसी को अगर से मुझे भेजना है तो मैं कैसे भेजूंगा आप में से? ठीक है, मैं अपने सिस्टम में इसको ओपन करता हूँ यहाँ पे। ओके चलो इसे काली की मशीन में ओपन कर लेते हैं। दिस इज माई काली मशीन। यहाँ पे ब्राउजर देखते हैं, यहाँ पे ब्राउजर होगा। we'll open that link into this Kali browser. Okay, so we will put over here. ओके एंड मैं यहाँ पे जस्ट इसको सर्च करूंगा। तो जैसे ही मैंने सर्च किया, मुझे यूट्यूब खुल के आ गया, क्योंकि वो यूट्यूब की लिंक को वहाँ पे इनकोड किया था। ओके बट यहाँ पे जैसे आप जाओगे, तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा उसके बारे में। यू हैव टू जस्ट रीलोड द पेज।
ओके, सो यू विल एबल टू सी यू कैन सी लिंक ओपन कब हुआ। यहाँ पे टाइम जोन तो अलग है क्योंकि यूटीएस का टाइम जोन है, वहां पे काली के अंदर टाइम जोन सेट नहीं है। तो ये 4:11 पे कुछ ओपन बता रहा है। काली के अंदर अगर से आप जाके देखोगे तो टाइम भी यही बताएगा। इसका टाइम, डेट और टाइम आप कैसे देखोगे, यहाँ पे कमांड होता है डेट करके, वहाँ पे साफ दिख जाता है। यहाँ पे तो प्रॉपर बता रहा है 9:42 समथिंग। Okay, so I think there is some time issue. And see, you can see the IP address. What is it? This is public IP address. Okay, this is time zone, and this is, you can convert this time into India zone. Okay, you can take this time and you can convert this time from UST zone, UTS zone to India zone. And this is public IP address. Okay, and it is this is the country name, and the browser क्या use किया, Mozilla Firefox use किया, Chrome होता तो Chrome बताता। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है जहां पे ब्राउजर यूज किया, अगर से आप मोबाइल फोन में यूज करोगे तो मुझे क्या आएगा, एंड्रॉइड समथिंग आएगा। अगर से आप, मैंने लिनक्स में ओपन किया तो लिनक्स आएगा। और अगर से विंडो में ओपन किया तो विंडो आएगा। जैसे देखो अभी मैंने यहाँ पे इनकेस ओपन किया और लिंक, सो मुझे यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन आएगी, एज यू कैन सी ओवर हियर। जस्ट अभी मैं अभी वापस जाता हूँ यहाँ पे, एंड यू कैन सी द ब्राउजर के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है और आईपी एड्रेस है। ओके, और इसको फिर रीलोड करते हैं तो मैंने एक बार और ओपन किया मेरे विंडो के ब्राउजर में। सो यहाँ पे देखो उसका भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गया। तो यहाँ पे ये लिनक्स की मशीन है। यहाँ पे देखो मेरा विंडो कौन सा है, विंडो NT10 है। विंडो 10 64 बिट का है। बाकी कुछ और इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। मेरा ये क्या है, पब्लिक आईपी है। ओके, सो यू कैन यूज दिस पब्लिक आईपी टू फाइंड लोकेशन ऑफ एनीवन। ओके, तो आप लोकेशन कैसे निकालोगे, आईपी टू लोकेशन। ओके, सो यहाँ पे आपको जस्ट उसका आईपी एड्रेस डालना होगा। तो वहां से आपको यू माइट गेट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दैट पर्सन। यू कैन सी यहाँ पे जो कहाँ कहाँ से है, सिटी इगतपुरी वगैरह कुछ दिखा रहा है, और यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट दिखा रहा है। ओके, सो ये रीजन तो रॉन्ग बता रहा है, सिटी तो रॉन्ग बता रहा है, बट वी कैन सी दैट कि यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, कि कोऑर्डिनेट्स प्रॉपर बता रहा है कि नहीं, ये मैं गूगल मैप पे डाल के देख सकता हूँ। ओके, और ये मेरे लोकल टाइम जोन वगैरह है, यहाँ पे मेरा डोमेन नेम वगैरह, और यहाँ पे जिप कोड क्या है, नासिक है, ये सब है। ओके, सो आप इस तरह से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो आईपी ये वेबसाइट से। कौन सी वेबसाइट का नाम है, ग्रेविफाई आईपी लॉगर। क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. यूजफुल होगी आप लोग के लिए। और यहाँ पे आपको एक और ट्रिक बताता हूँ कि आप इंस्टाग्राम इंक्रीज, हाउ कैन इंक्रीज द योर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। सो यू कैन से दिस इज अ टिप्स, bonus tip, you can say this is a website where you have to go। बढ़ाने में इंटरेस्टेड हो अपना इंस्टाग्राम लाइक्स एंड फॉलोअर्स एंड ऑल, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दिस वेबसाइट। तो यहाँ पे आपको कुछ उल्टा सीधा लिख के आएगा विच विल नॉट अंडरस्टैंड, सो यू हैव टू लॉग इन इनटू दिस। ओके, सो आई थिंक आई ऑलरेडी हैव लॉग इन, आई हैड ऑलरेडी लॉग इन, I have this website over here, I already have login into this। Let's see, oh I think it is log out। ओके, सो मैं यहाँ पे एक बार लॉग इन करता हूँ, मैं थोड़ा ये स्क्रीन को ऑफ करता हूँ। ओके, मैं शेयरिंग करना बंद करता हूँ, फटाक से लॉग इन करके आपको वापस से स्क्रीन शेयर करता हूँ, चलेगा। Yes, Yes, sir. sir. तो सो अभी यहाँ पे बट गाइस ये होंगे थोड़े वैसे फॉलोअर्स जो, और यू कैन से कि जो आपको लाइक भी मिलेगा थोड़ा वैसा होगा कि आप, वो परमानेंट नहीं होगा, बट या यू कैन डू इफ यू वांट।
or either there is another option which I will tell to you instead of login myself, क्योंकि time limit भी है. Okay, it takes time. Okay, so I will tell you how you can do. Okay, so what you have to do is that you have to just log in into this website with the help of your fake account. You have to create one fake account of Instagram. Okay, जो कि ऑलरेडी सबके पास आई थिंक होगा. ओके, सो यहाँ पे आपको जस्ट एक फेक अकाउंट क्रिएट करना होगा. यू हैव टू लॉग इन ओवर हियर विद दैट क्रेडेंशियल. ओके, हियर यहाँ पे आप लॉग इन कर सकते हो. वो क्रेडेंशियल यहाँ पे यूजर नेम, यहाँ पे पासवर्ड, फिर आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा. ओटीपी आप डाल के जस्ट एक फेक जो अकाउंट होगा उससे लॉग इन कर लेना. ओके, फिर वहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे, वेदर यू वांट टू इंक्रीज फॉलोवर, लाइक्स, कमेंट एंड एवरीथिंग. जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन दैट एंड आपको जस्ट अपनी जो ओरिजिनल आईडी होगी उसको आपको लैपटॉप में ओपन करके, अगर से आपको लाइक बढ़ाने तो आपको लाइक का जस्ट जो लिंक कॉपी करना होगा और आप पेस्ट करके स्टार्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली इन 10 मिनट विल बी गेटिंग आई थिंक 50 to 60 लाइक्स. ओके, तो ये इससे काम करता है. क्लियर है गाइस, समझा आपको? हेलो. No, sir. नो. आपको क्या करना है, जस्ट वहां पे आपको एक फेक अकाउंट बना लेना है इंस्टाग्राम का और वहां पे आपको उससे लॉगिन करना है. ओके, देन लॉगिन करने के बाद वहां पे आप जस्ट लॉगिन करके देखना, वहां पे आपको ऑप्शंस दिखेगा और वहां पे आपको एक यूआरएल पेस्ट करने का ऑप्शन भी होगा. वहां पे आपको ओरिजिनल जो जहां पे आपको फॉलोअर बढ़ाना है जिस प्रोफाइल का, सो आपको वो प्रोफाइल का यूआरएल डालना पड़ेगा या फिर उसकी लिंक डालनी पड़ेगी. ओके, ऑटोमेटिकली वहां पे you will see eventually you will be getting one and one more follower. ओके, सो आपके हो जाएंगे 100-150 फॉलोवर. ओके, क्लियर है? Okay, sir. मैंने मॉर्निंग में किया था ट्राई बट ऑटोमेटिकली वो लॉग आउट कर दिया. ओके, और थोड़ा टाइम लगता है वो लॉगिन होने को ही वो 1.5 से 2 मिनट ले लेता है. तो दिस इज द प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई आई एम नॉट शोइंग यू. नहीं तो मैं आइदर आपका ही मैं क्या बोलते हैं यूजर नेम लेके मैं बढ़ा के देता था. द प्रॉब्लम इज दैट कि उसने लॉग आउट कर दिया. Okay, so we'll have some more theory part like what are the attack vectors. What is the attack vector? Okay, कि attack कहाँ कहाँ से क्या क्या हो सकते हैं. What is difference between attack vector and attack surface? Okay, so what are the 10 most common attack vectors? So software vulnerability attacks मतलब कहाँ कहाँ से होते हैं. So software that you are using that could be vulnerable. Okay, so if you are downloading any kind of software from Google, torrent and from anywhere, and if that is vulnerable, so that vulnerability could be very serious issue for your system. Okay, so software vulnerability also exists if a network operating system or a computer network or application as an unpatched security vulnerability. Means unpatched means if the vulnerability is existing and somebody exploited that, and even though that developer is not patching, that is unpatched. Okay, so software vulnerability you can consider as a most common attack vector जहां से सबसे ज्यादा होते हैं. And compromise user credential, what do you mean by that? Attackers लोग brute force करके वहां से आपका login ID and password and all वहां से वो पता कर सकते हैं. ओके, कि जैसे कि brute force means क्या होता है कि should I show you the demo of brute force? There is just 9 to Yes. 10 minute. ओके, we'll see. यहाँ पे मेरा DBWA खुला होगा. Just open DBWA and we'll go to here. यहाँ पे आपको DBWA पे जाना है. यहाँ पे आपको ब्रूट फोर्स का ऑप्शन दिख रहा है. यहाँ पे आपको यहाँ पे मान लो आपको यूजर नेम पासवर्ड नहीं पता, यू डोंट नो द यूजर नेम एंड द पासवर्ड. ओके, यूजर नेम पासवर्ड आपको नहीं पता, कुछ भी आप डाल रहे हो, रूट रूट लॉगिन नहीं हो रहा, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, व्हाट यू कैन डू इज
लॉगिन नहीं हो रहा है। ओके, सो देर इज अ टूल कॉल्ड एज बर्ब सूट। ओके, सो बर्ब सूट के कितने वर्जन आते हैं? 3 वर्जन आते हैं। एक उसका कम्युनिटी एडिशन आता है, एक इंटरप्राइजेस एडिशन आता है, और एक प्रोफेशनल लेबल आता है। सो जो आप काली यूज करोगे, इन दैट विल बी गेटिंग दैट कम्युनिटी एडिशन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, and professional edition is for the person who are highly on the level where they are able to use that professional label workshop. Okay, but that is not free, that is paid tools. Okay, and the enterprises label is also paid tools. The only free is community edition, which is already inbuilt into Kali Linux, so you can use that. And I have also one Bob suite over here which I will open. This work as a proxy. So I will perform too fast. As you can see, there is a proxy option. There are different tabs. Okay, so this is dashboard, you can say. This is target, where you can define the target. There is a proxy. Okay, so जो भी मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा, जस्ट इट विल बी, जैसे फायरवॉल कैसे, जो भी रिक्वेस्ट हमारे इंटरनेट से जो भी पैकेट जाती है फायरवॉल से होके जाती है, जो भी पैकेट आती है दैट विल आल्सो एंटर थ्रू फायरवॉल ओनली. So this is the proxy, or you can say this is the tool which also work as a proxy server, or this is packet inspecting tool, you can say. Okay, so this is, you can say, very important tool into VP APT and all. Without this, nothing will happen. I think there will be a thing which you can do, but this is, you can say, a main weapon for cyber security researchers and ethical hackers. This is the main weapon tool, you can say. Okay, so see, there is a username part and the password part. यहाँ पे जो भी मुझे मिलेगा, मैं उसको यहाँ पे यूजर नेम इनकरेक्ट एंड रॉन्ग आ रहा है, यहाँ पे what I will do is that I will copy this link यहाँ पे, instead of मुझे यहाँ पे इसको फायरफॉक्स में ओपन करना चाहिए था. ओके, सो यहाँ पे मैं जस्ट इसको ओपन करता हूँ. यहाँ पे क्या है, एडमिन एडमिन, यहाँ पे जस्ट मैंने लॉग इन किया, नॉट सेव किया, ब्रूट फोर्स पे गया, एंड यहाँ पे मैं कुछ भी एक सिंपल सा इंटरसेप्ट मेरा मैं यहाँ से ऑन करूंगा. ओके, यहाँ पे आपको जस्ट क्या करना है, इफ यू आर राइटिंग रूट एंड रूट विच इज द रॉन्ग क्रेडेंशियल आई थिंक. ओके, पासवर्ड भी आप रूट डालते हो तो यहाँ पे रॉन्ग क्रेडेंशियल है. ओके, अगर से आप यहाँ पे जाओगे इंटरसेप्ट पे, तो यहाँ पे आपको कुछ तो मिला है. ओके, हेडर्स पे आप जाओगे, और या फिर आप प्रॉक्सी ऑप्शंस, ये भी सेट है. ओके, यहाँ पे इंटरसेप्ट मैं ऑफ करूंगा, फिर इंटरसेप्ट पे जाते हैं, इंटरसेप्ट ऑफ करते हैं, और यहाँ पे ये हुआ. ओके, अब वापस से ट्राई करते हैं दूसरा कुछ, रूट 1, और पासवर्ड भी रूट 1 डालते हैं. अभी इंटरसेप्ट में ऑन करूंगा एंड यहाँ से लॉग इन करूंगा. सो यहाँ पे मुझे देखोगे कि वहाँ पे वो जो पैकेट थे मिल गए, यहाँ पे जो मैंने ट्रांसफर किया था, रूट 1, कैन यू सी? दिख रहा है आपको? यहाँ पे यूजर नेम मैंने क्या यूज किया था, रूट 1 यूज किया था, एंड पासवर्ड क्या यूज किया था, रूट 1 यूज किया था. अब ये दोनों पे मैं ब्रूट फोर्स करके इसका एग्जैक्ट पासवर्ड निकाल सकता हूँ. ओके, सो हाउ यू कैन डू इज दैट, यू हैव टू put it into intruders. यहाँ पे intruders because it to brute forcing. तो जैसे आप intruders पे करोगे, यहाँ पे एक आपको positions का ऑप्शन दिखेगा, आप इसको just you have to clear it and you have to double click on this add. जैसे कि मुझे यहाँ पे यूजर नेम के लिए ब्रूट फोर्स करना है और पासवर्ड के लिए ब्रूट फोर्स करना है. सो दीज आर द ओनली ऑप्शंस जहाँ पे मुझे ब्रूट फोर्स करना है. और यहाँ पे मैं क्लस्टर बॉम्ब यूज करूंगा. सो क्लस्टर बॉम्ब जहाँ पे मैं यूजर नेम और पासवर्ड दोनों जगह पे मेरी लिस्ट अप्लाई होती है. Okay, guys. So you have to go to this payload option and you have to whether it is on cluster bomb, yeah, it is on cluster bomb. You have to select a list over here, runtime list.
or this is password one, and there is a one list into my Linux command. I have list. I have to give path of that list. There is a okay, whether I can give a different password also. See, यहाँ पे भी हम लोग दे सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड जो होता है ना, ऐड, या फिर इंस्टेड ऑफ एडिंग फ्रॉम हियर रन टाइम लिस्ट या फिर सिंपल लिस्ट यहाँ पे भी दे सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जस्ट जैसे कॉमन पासवर्ड क्या क्या हो सकता है, वहाँ पे रूट हो सकता है, ओके, और एडमिन हो सकता है, और बताओ मुझे क्या क्या हो सकता है पासवर्ड वहाँ पे। पासवर्ड भी हो सकता है, और कुछ भी, गुड बैड कुछ भी आप यहाँ पे भी डाल सकते हो, जैसे कि टूर भी आप डाल सकते हो, रूट का उल्टा टूर होता है। ओके, सो यहाँ पे आप ये डाल सकते हो, और पासवर्ड के लिए आप दूसरा पेलोड भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे ये सारे मैं कॉपी कर लेता हूँ। पासवर्ड में भी हम लोग ये सेम डाल देंगे। सो एज यू कैन सी, मैं यहाँ पे भी एक सिंपल लिस्ट में सारे पासवर्ड ऐड कर दूंगा। एक एक ही करना पड़ेगा। ओके, सो मुझे वहाँ पे क्या क्या डालना है, रूट डालना है, और टोर डालना है, एडमिन। टूर ही एंटर किया। ओके ठीक है, चलेगा, मैं वापस से दूसरा कर देता हूँ। रूट, यहाँ पे पासवर्ड, WORD पासवर्ड, ओके, गुड बैड कुछ भी डाल सकता हूँ मैं अभी, रैंडम पासवर्ड जो मुझे लगता है कि पासवर्ड हो सकता है। ओके, so what you have to do, just you have to, here you can see that is start attack option, you have to click on that start attack, यहाँ पे आपको उसका दिखेगा। सो ये क्या कर रहा है गाइस, देखो यहाँ पे रूट को कंसीडर करके टूर ऑप्शन उसके सामने एज अ पासवर्ड रखेगा, फिर उसके बाद एडमिन को उसके सामने पासवर्ड रखेगा, एक एक को पासवर्ड बना के देखेगा। फिनिश भी हो गया। यहाँ पे लेंथ पे आप डबल क्लिक जब करोगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन जो होगा, जो नंबर देखो, एक नंबर अलग दिख रहा है, सब नंबर क्या है, 522 है, कैन यू सी, यस। बट वहां पे एक नंबर है जो ज्यादा अलग है, दिख रहा है, फर्स्ट वाला क्या है उसका नंबर, 5283, मीन्स उसका लेंथ ना थोड़ा अलग है। सो पासवर्ड हम लोग ये यूजर नेम पासवर्ड हो सकता है, क्या है, एडमिन एडमिन। सो वहां पे जाते हैं एंड विल सी वेदर इट इज यूजर नेम पासवर्ड और नॉट। तो एडमिन एडमिन, सो एज यू कैन सी, ओके, मुझे प्रॉक्सी पहले उसकी ऑफ करनी पड़ेगी। ओके, बिकॉज प्रॉक्सी ऑन है, वहां पे भी वो कैप्चर कर रहा है कंटिन्यूअसली। प्रॉक्सी ऑफ कर दे एक बार। अब यहाँ पे चलो एडमिन एडमिन ट्राई करते हैं, एडमिन एडमिन। ओके, सो विल सी दिस दैट वेलकम टू पासवर्ड प्रोटेक्टर एरिया डोमेन, मतलब कि लॉगिन हो चुका है। ओके, सो इट डिपेंड्स कि जैसे मैंने छोटे से 5 वर्ड की 5 कॉमन पासवर्ड की एक लिस्ट बनाई थी। सो वहां पे आप मल्टीपल जो होते हैं पासवर्ड, उसकी भी आप लिस्ट बना सकते हो, जैसे कि गूगल पे बहुत सारे पासवर्ड लिस्ट मिल जाती है। क्रोम के अंदर यहाँ पे एक पासवर्ड लिस्ट, क्रोम नहीं, काली के अंदर एक लिस्ट होती है पासवर्ड की, रॉक्यू नाम से, जिसके अंदर बहुत सारे कॉमन पासवर्ड है। ओके, एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे रॉक्यू दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, जस्ट गो वन स्टेप बिफोर, यहाँ पे रॉक्यू दिख रहा है, रॉक्यू डॉट टी सी, दिस इज रॉक्यू डॉट टी। यहाँ पे आपको बहुत सारे इसके मिल जाएंगे। GZ-D यहाँ पे यूज करूंगा इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ओके, सो कमांड नॉट फाउंड बता रहा, अनजिप, ओके, सो R का LS
So it is not unzipping, but even though can I read it? Doc.txt, yeah, you can read, but it is encrypted because that is in zip format. Okay, so you can unzip it. It is a text file also, and CZ, no. So you can use that option to unzip. How you can unzip? Dot CZ unzip. How you can unzip? You will be getting command how to unzip. So it is you have to off this. Okay, so to extract, you can use unzip. Okay, so let's see whether I can unzip or not. Unzip you. Whether I think I'm not root user. That's why कि मुझे unzip करने नहीं दे रहा है. Okay, but yeah, you can unzip it, and there are also many what you can say. See, as I told to you, and मैं आपकी लिस्ट है यहाँ पे. मैं आपको मेरे पास एक लिस्ट है पासवर्ड की डेस्कटॉप पे, वो दिखा देता हूँ. डेस्कटॉप यहाँ पे आपको 10 मिलियन कॉमन पासवर्ड दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं. तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पासवर्ड है जो जनरली कॉमन पासवर्ड होते हैं. Okay, so these are the common password which use people are using on their website and all. So attackers can easily brute force their website, their authentication username or password. Okay, so make sure that कि आप password इसमें से ना रहे. So you'll be safe. Okay. Okay, guys, am I clear? Yes, sir. Okay, should we Yes. conclude? Or any doubt, anyone? If you have any doubt, No. we can take. Any doubt, guys? No? No, sir. Okay. So we'll see you guys tomorrow on the same time. Okay. Have a nice day, guys. Yes, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Goodbye. Thank you, sir. Goodbye, everyone.